therapy as well as I practice barge flower and vermology. तो आज आपका टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है. यू गोइंग टू टॉक अबाउट द साइंस ऑन मेनोपॉज, राइट? Yeah, तो signs of menopause and the effective management for how to manage these symptoms of menopause. सो आप प्लीज स्टार्ट करें. सो आप Okay. शेयर करें जो आपकी नॉलेज है. Yeah, as I've given my introduction, like I practice this modality of healing, and I have earned this degree from Shrishi Arts of Healing College in Bangalore, and I'm doing this practice from last 5 to 7 years. So today I will love to address the challenges that most women face during menopause and would love to discuss the effective menopause management strategies. So we should understand here first what is menopause. Menopause is a natural biological process where a woman stops menstruating for 12 consecutive months, making the end of her reproductive years. It typically occurs between the age of 40 to 50, and during transition, hormonal changes can lead to various symptoms, including hot flashes, irregular periods, irritation, frustration, mood swings, high blood pressure, diabetes, and many more symptoms are also there. Sometimes it is noticed that gastric bloating feeling, acidity is also due to menopause. And we have often come across the word pre and post menopause. So, what is pre menopause? Like you can describe it as transition to menopause or shift to the end of reproduction here female may feel or may have menopause like symptoms such as again as hot flashes, irregular periods. Here the flow may sometimes they may have heavy bleeding, sometimes it's very little also. Mood swings will be there, depression, low libido, dryness in vagina, urgency in urination, sleep issues are also there. And postmenopause refers to the phase after menstruation has ceased. Women continue to experience hormonal changes, often leading to symptoms like irritation, headaches, mood swings, increased risk of blood pressure, and diabetes. So, menopause management largely depends on lifestyle and environmental factor. Awareness and proactive steps can significantly improve a woman's quality of life during this transition. The importance is that many women are unaware that counseling and treatment options exist to help manage menopause symptoms. There must be an, I think there must be an open discussion among friends, within family members, with husband, or even with grown-up children that can break the stigma and provide much needed support. Having personally navigated these challenges, I discovered menopause focused approach that greatly helped me. And I would love to share this effective lifestyle changes. Actually, I have faced this menopause uh, issues 4 years, continuously 4 years, I was facing the problem. Adapting this lifestyle changes, I resolved my problem. So I would love to share these lifestyle changes. And if you want to jot down these points, what lifestyle changes we should adapt, please grab pen and paper. Sorry, I would have stated that while I was starting this, so that you would have managed pen and paper along. If you want few minutes, just grab your pen and paper and I'll discuss the point.
So the changes first, it is like we women should have sunlight exposure. Spend at least 1 hour in sunlight daily. In morning, it may be timing is from 7 to 9, and evening it is 4 to 6 p.m. As sunlight is essential for vitamin D absorption, which aids nutrient absorption and overall health. And the second point is walk at least 10,000 steps daily. Again, you can divide this 5,000 in the morning and 5,000 in the evening. If you are taking this steps in the morning, your sunlight exposure to your sunlight can parallelly, you will meet both these points. So you can also do like this if you are working, you don't have time. So if you have an open gallery, you can go there. If you have a call, you just have walk and talk. Parallelly, you can have your sunlight there also. So you manage according to your time. When can I be exposed to the sun? So first is sunlight exposure. Second one is 10,000 steps. You can calculate from morning to night, there should be a total 10,000 steps. Now, balanced nutrition. Uh, we should consume raw food also. I think it was 2% of your body weight should be consumed raw food. And what is raw food? Raw food, nuts, seeds, salads, mm, sauté vegetables, boiled vegetables, these all will come under raw food. And ensure that your plate has at least 3 different colors. If you are consuming salads, there your food plate is colorful then. And it plays a very important role. Colors play a very important role. If I'll discuss these, it will take more time. I will first complete all the points. And then nuts and seeds. Eat a handful soaked nuts and seeds daily. And most important here is that soak the nuts and seeds at night, and while consuming it in the morning, throw that water, because that water contains phytic acid, and phytic acid is like if there is phytic acid, it would inhibit the nutrient absorption. I will give here one example. अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा, पहले जो दाल बनती थी वो ओपन वेसल में बनाई जाती थी और उसको खूब बॉईल किया जाता था और ऊपर एक फ्रॉथ सा आता था। ये जो फ्रॉथ आता है वो फाइटिक एसिड है, उसको हमारी नानी दादी, इवन माय मदर आल्सो कुक लाइक दिस आल्सो। तो वो फाइटिक एसिड को निकालते थे, इसलिए उसका एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से होता था और उससे ब्लोटिंग, एसिडिटी एंड ऑल नहीं होती है। तो जितने भी नट्स एंड सीड्स हैं इनको सोक करके कंज्यूम करना चाहिए, और जो पानी है उसको थ्रो कर देना चाहिए, उसमें फाइटिक एसिड होता है। ओनली आई थिंक ओनली किशमिश का जो पानी है वो आप कंज्यूम कर सकते हो। एंड वन थिंग मोर आई वुड लाइक to come to make your notice here that almond को peel करके ना खाएं. Eat almond with its skin because it contains essential fiber. Now, now you can. The next point is that make changes in your timing of waking up. Like for an example, like
Waking up at 5 a.m. provides enough time for me to take my to have my self care for my meditation, for my exercise, for my walk. 2 hours is sufficient. It it reduces cortisol level, and cortisol is our stress level. So you will be prepared to take the challenges, whatever you are there in the routine. You are prepared to face your day. So in this morning routine, you should add 7 minutes of pranayam and exercise, walk, sunlight exposure, and before dental hygiene routine, you should do oil pulling. Oil pulling is like gargle with coconut virgin oil. Take 1 to 2 spoon of oil. You can do with rice kanji as well as with beetroot water. Take 1 to 2 spoon of oil or kanji or beetroot water. Gargle it for 30 seconds and then split it out. All the bad bacteria from your gut will come out and it will give you a good digestion. And in this morning routine, uh, fix your time to sit in a malasan. Malasan is like how we sit in a squat position, that is malasan. And while sitting in malasan, you can have your concoction. I will explain here further what is concoction. And then ensure that you are having 5 to 6 hours of sleep. And before sleeping, again, please practice 7 minutes of pranayam, because pranayam detoxifies internal organs and improve the quality of your relaxation. Now, I would suggest to have your dinner early. At least finish your dinner by 8 p.m. It will allow your digestion to be proper. And I think this is a self care, and self care is not selfishness. Actually, when I used to discuss with my friends, they used to say, oh, family to लेट डिनर करती है, मैं पहले कैसे खा लूं, हम वुमेन्स को ऐसा रहता है कि अभी घर में किसी ने खाया नहीं है, हम कैसे खाना खा ले. No, this is self care. And if you are fit, you are the pillar of the family. Then you will be able to look after everybody. So have your dinner by 8 p.m. and have your concoction when you are serving dinner to the family. So I will explain here concoction. In our kitchen, we have lots of herbs like jeera, saunf, ajwain, kali mirch, elaichi, dhania, cinnamon. Huh? So take 400 ml of water and put one. If you're putting cinnamon, put 2 pinch, and jeera, saunf, ajwain, one and a half teaspoon of put in the water, 400 of ml of water, and put whichever flavor you want. Cinnamon help is very helpful for the diabetic person, and jeera and dhania. These herbs are helpful for the digestion as well as bloating, and even for if there is water retention, then also jeera water is very helpful. Boil that. As you have taken 400 ml of water, boil that for few minutes. When it is reduced to 350 ml,
pour it in your cup and have it sip. This will help you a lot. These herbal concoction uh, are very, very much effective. This is my personal experience. And you can rotate these flavors now weekly. 1 week you take jeera, 1 week you take methi, 1 week you take cinnamon, and notice what changes are coming. And this concoction should be taken twice, early in the morning and at night. And the next point is that if you are having your dinner by 8 a.m., you are naturally doing intermediate fasting. You will able to maintain 12 hour of fasting window by having breakfast. If you are having breakfast by 8 p.m., after having your dinner 8 by sorry, you are having your dinner by 8 p.m. and you will have your breakfast by 8 p.m. So 12 hours of fasting is there. So this helps to regulate weight, but it balances hormones, and menopause symptoms are managed properly. These all lifestyle changes I have adapted, and I have seen a drastic change in myself. I lost 10 kg in a month following these all lifestyle changes. And you can even track, if you are adapting this lifestyle, you can track how I am progressing. You can conduct your blood test before and after the changes you are adapting. You will see a change in your vitals. And following these simple yet powerful lifestyle adjustment can significantly ease menopause related symptoms, leading to a healthier and more balanced life. By embracing these strategies, women can gracefully transition through menopause, maintaining their independence and well being. I hope these insights help you as much as they have helped me. So let's embrace menopause with knowledge, awareness, and positive approach. And I really thank my menopausal coach to guide me like this. And she guided me, and I was, as I lost my 10 kg also, and my vitals were like vitamin D, B12, my hemoglobin, everything was proper on the mark. After bleeding continuously for 4 years, there was no, my vitals were perfect. So I would love if you would also adapt this lifestyle. Any query that I can, or any question which I can answer? Yeah, the Zira Pani, I take Zira soft and Sabut Dhania and I boil it and because I had done a gut cleansing program and it said use this Yeah, detox water, but you're not yeah. supposed to use it continuously. And why? Why can't you do that? Continuously means I'm not getting. Means rose every day. वो कहेंगे take it for 15 days and then stop it. And then Yeah, maybe give it a gap and then later yes, maybe. yes, it is like that only. Because गैप देना पड़ता है कि जो हम अभी ले रहे हैं, लाइक यू आर टेकिंग जीरा, मेथी एंड धनिया. Zira soft and dhania. जीरा, सौंफ एंड धनिया ना, राइट. I tried ajwain, but it is so bitter. I couldn't take it. You can put little jaggery in that No, ajwain. I don't want to add
all this paraphernalia of jaggery and khand and all that. So then that maybe adding a little cinnamon, I don't know, one can try that. Mm. Cinnamon is also So very good. yeah, I know. Even Also, we were I even mean, we were this also told like that only कि after 10 days or 15 days you keep on changing the flavor. Like there are so many to other boil issues, no? मेथी को बॉईल करने से मेथी भी कड़वी हो जाएगी. अगर कड़वा है, if you can bear that taste, it is very good. Methi regulates your pain also. If there is a body ache or knee, मेथी पेन में भी लिया जाता है. But how about you said you can have it at night? Even in Night, the how do you take morning it? At and what? at night. Morning No, भी but night, what time? like if you have taken your, for an example, you have taken your dinner by 8, then by 9 you should take that. And it Stomach is depends not upon by empty. what time you are going to sleep. What is your sleep time? It also depends on that. Just take 1 hour before your sleep. 1.5 hour का gap होना चाहिए ये concoction लेने में. I see. Okay, Yeah, thank you. yeah, my pleasure. Nice, interesting information, Gurmeet. Thank you so Thank you much. so much, Meenuji. Thank you. Good evening, Umaji, for asking also. Yeah, So, well, Hope so I have answered you properly, yeah, Umaji. yeah. yes, definitely. Yeah. So, I mean, you said keep altering. That means, what are the alterations? I mean, what are the other things that you can do? Methi dana is one, and then you take it for how many days? Even ilaichi. You can take only But ilaichi ka long in the concoction. summer is going to It be. depends again, yeah, you check out with the weather. One more point, मुझे अभी एक point और याद आ रहा है. Like again, check with your body suitability, your temperature in which area you are. Morning में जब हम नहाते हैं ना, तब we should have a cold water bath. And at night, before sleeping, we should have hot, like lukewarm water. We should take a bath with lukewarm water. Twice to take a bath. No way. आपको नींद बहुत अच्छे से आएगी. नहीं मुझे आ जाती है नींद. Thank you. If there is a sleep issue, you can adapt this trick. I will tell somebody who can't. Yeah. और ये भी है, ये जो नॉलेज है हमें ये हमें अपने और भी फीमेल्स जो है घर में, आइदर दे आर मेड और आर डॉटर्स और डॉटर इन लॉ और सिस्टर इन लॉज, ये सब, ये नॉलेज हमें उनके साथ शेयर करनी चाहिए. बिकॉज मैंने देखा है बहुत लोग सफर करते हैं इस मेनोपॉजल सिम्टम्स से, और समझ में नहीं आता है कई बार कि ये क्यों हो रहा है हमें. और उसका कारण ये मेनोपॉज होता है, दिस ट्रांजिशन पीरियड, बिकॉज हार्मोन्स बहुत चेंज होते हैं. और डॉक्टर्स After जनरली, menopause, you also have या a great chance of developing, all these lifestyle diseases, यस, thyroid, या BP, all this, and then your bones also get यस, weak. वी फॉलो अ पर्टिकुलर डाइट ऑल्सो, सो दैट आफ्टर मेनोपॉज वी आर not One has to facing do these also problems. weightlifting. Yeah, exercise is also most important. Weight training should be there. Flexibility training should be there. Different exercises are there which should be taken care of. So, what is the diet that you recommend? Diet is like, as I have discussed in the earlier, 2% of your body weight should be your raw food, and then fiber.
and protein. Mhm. How much protein is a big thing. And then somebody said eggs are vegetarian. Eggs are not non-vegetarian things because they're not going to have. No, no. There are different studies nowadays. But yes, obviously, people have egg to have protein. You should have protein. It depends. I think in Again, India there is a people don't eat calculation. protein. 200, 200 or 300 grams of protein in every meal, if I'm not wrong. So how do you supplement it? Sorry. How do you supplement it? Uh, दाल का चिला, दाल का ढोकला. Because I'm vegetarian, I prefer these types of things. But Peanut dal also has a butter. lot of fat. No, moong dal, only moong dal. Or yes, all the legumes should also be soaked for at least 48 hours. Or in between, keep changing the water of that and rinse it thoroughly and throw that water. अगर ऐसे 48 hours means 2 days. It will yes, ferment, yes, no, no, it will not. I do like that. but you keep it outside. Yeah, but I keep on changing the water, no? Keep on changing the water. If you're feeling like it's smelling, then you put it inside the fridge. Otherwise, like 2 days it should be. अगर ऐसा इस प्रोसेस से हम चने, राजमा और भी जो होल ग्रेन्स है उनको बनाएंगे ना, तो कभी भी ब्लोटिंग नहीं होगी, गैस्ट्रिक इश्यूज नहीं होंगे, वो बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होगा, उसके सारे न्यूट्रिएंट्स हमें मिलेंगे. विटामिन सी भी हमारे डाइट में होना बहुत जरूरी है. There's a question So like, what is the amla is benefit of soaking for 48 hours? यस मीनू मैम. Yeah, question एक आया है राखी से, I think. What is the benefit of soaking for 48 hours? इनमें भी he फाइटिक just he एसिड. just shared it. He just इनमें shared it that it won't cause any bloating. या इनमें भी फाइटिक एसिड होता है. वो वो भी पूरा निकल जाता है. और इस ये जब आप सोक करने के बाद जब आप बॉईल करोगे ना, तब आप खुद देखो, आप उसको टच ही करोगे ना, तो यू विल फील लाइक ओ इट्स वेरी लाइट सॉफ्ट. और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है. और इसके जितने न्यूट्रिएंट्स हमें मिलने चाहिए ना, वो पूरे हमारी बॉडी को फिर वो एक्चुअली इट्स एब्जॉर्ब होता है फिर. इसलिए उसका 48 आवर्स सोक करना जरूरी है. इवन आई विल रिपीट दिस कि अगेन नट्स एंड सीड्स को भी एटलीस्ट 4 to 6 आवर्स सोक करने के बाद ही कंज्यूम करना चाहिए. Nuts, though everybody soaks at night. या But what seeds are you talking about? seeds, pumpkin seeds, flax seeds, sunflower seeds. If you are using chia seeds, that can be 1 to 2 hours, or even 1 hour is also sufficient for chia seeds. एंड अगेन चिया सीड को भी वो वाला पानी आप थ्रो कर दो, और एक बार फ्रेश वाटर से उसको सीव कर लो, एंड देन कंज्यूम इट, चिया सीड्स. But you're saying sunflower seeds, pumpkin seeds soak at night. हाँ, आई तो डू लाइक दैट. Why do you need to soak seeds? It's not easily digestible. यस, बिकॉज ऑफ फाइटिक एसिड. उसमें भी बहुत फाइटिक एसिड होता है. और फाइटिक एसिड ना, हम जितना भी कई बार ऐसा हुआ है ना, हमने काफी बार सुना है, और पहले मैं भी यही बोला करती थी कि वो आए तो ईट हेल्दी फूड, बट पता नहीं मेरे वाइटल्स क्यों नहीं ठीक आते हैं. मैं तो ये भी खाती हूँ, आयरन का भी पूरे सप्लीमेंट, आयरन की भी जो जो चीजें हैं मैं खाती हूँ, वो मेरी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता था. उसके पीछे रीजन ये भी था कि विटामिन सी
साथ साथ में इफ आप आयरन की कोई चीजें ले रहे हैं तो विटामिन सी का लेना साथ में बहुत जरूरी है, अदरवाइज आयरन एज इट इज बॉडी से बाहर चला जाता है, वो एब्जॉर्ब नहीं होता है बॉडी में। सेम लाइक जो फाइटिक एसिड है वो भी जो हमारे न्यूट्रिएंट्स जो हमें मिलने चाहिए, जो भी हम खा रहे हैं उसका जो न्यूट्रिएंट है वो हमारी बॉडी को मिलना चाहिए। तो अगर उसमें फाइटिक एसिड है तो वो बिल्कुल एब्जॉर्ब नहीं करने देगा, वो एज इट इज बाहर फ्लश आउट हो जाता है। इसलिए सोक करना जरूरी है। और वो पानी को रिंस करके वो पानी को निकाल देना चाहिए। सिर्फ किशमिश का पानी है उसको बस हम यूज कर सकते हैं, How बाकी और about भी जितने भी नट्स हैं। figs? Figs, इवन figs, सॉरी, अंजीर, figs. हाँ अंजीर को भी आप सोक करके खाएं। Overnight or for a couple of hours? यू कैन सोक इट फॉर कपल ऑफ आवर्स। मैं तो ओवरनाइट छोड़ देती हूँ बिकॉज फिर मैं भूल जाती हूँ कि मेरे को वो भी ये भी मैं ना चेंज करती रहती हूँ। जैसे 3-4 नट्स लगातार एक हफ्ते खाए हैं तो फिर कुछ और दूसरे नट्स में नेक्स्ट वीक में दूसरे नट्स ऐड कर लेती हूँ। तो फिग जब भी ये अंजीर जब भी होता है तो मैं रात को ही कर लेती हूँ। मैं वो खा लेती हूँ बट मेरे बच्चे नहीं खा पाते वो। तो इट डिपेंड्स अपॉन कि कौन कैसे खा ले, बट इट्स बेटर टू हैव इट सो। And the water? वाटर इसका थ्रो कर देना चाहिए। और अगर किसी को ड्यूरिंग पीरियड्स क्रैम्प्स होते हैं बहुत ज्यादा ना, स्टमक में भी बहुत ज्यादा क्रैम्प्स होते हैं, तो उनको थोड़ा लंबे टाइम तक जो बड़ी वाली किशमिश होती है ना, वो 5 to 6 रात को भिगा के वो उनको सुबह एम्प्टी स्टमक में खाना चाहिए। अगेन पानी, Are ये you वाला talking of पानी, manakka? मनक्का, राइट, ये खाना चाहिए। और जो बटरफ्लाई आसन है वो डेली मैंडेटरी करनी चाहिए किसको? जिनको पेन होता है ड्यूरिंग पीरियड्स। और मैंने आगे भी डिस्कस किया था कि मलासन में भी बैठना चाहिए, वो डाइजेशन को बहुत इम्प्रूव करता है, उससे कॉन्स्टिपेशन नहीं होता, गैस्ट्रिक इश्यूज नहीं होते। एटलीस्ट 5 मिनट्स भी बैठ गए, धीरे धीरे आप इंक्रीज कर सकते हो टाइम। अगर आप नहीं बैठ पा रहे हो मलासन में तो आप ना नीचे की तरफ पिलो रख के बैठ जाइए, तो धीरे 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 वो हैबिट में आ जाएगा। फिर आप पिलो रखना कम कर दे, पहले 2 पिलो रख लें, फिर एक पिलो में रख के बैठें, फिर बाद में वो जो एक पिलो रख रहे हैं वो भी हटा लीजिए। तो वो फिर धीरे से प्रैक्टिस में आ जाएगा, मलासन में बैठेंगे। आपने एक मोडालिटी का मेंशन किया था दैट यू प्रैक्टिस दैट मोडालिटी, सो हाउ इज इट हेल्पफुल इन मेनोपॉजल? उसमें हेल्प करती है the modality you practice? Bark flower and this craniosacral therapy. Yeah, And craniosacral. How does that yeah, help? it is a touch therapy. Uh, Okay. it taps to the uh, like our body has self healing capacity, Mm-hmm. but during our lifespan हम Mm-hmm. कई सारी चीजों में एंगेज हो जाते हैं जिसको वो हम नोटिस में नहीं लाते हैं कि ये चीज, जैसे हमारी बॉडी में अगर कट हो जाता है, मान लो किचन में काम करते करते जल गया, कट गया, या खेलते वक्त बचपन में इतनी बार हमें चोट लगी है और हम कुछ नहीं करते थे बट वो अपने आप ठीक हो जाता था। तो ये बॉडी की एक सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी होती है। तो सीएसटी से हम उसी को टैप करते हैं कि जो पावर अंदर है हमारी बॉडी में टू हील आवर सेल्फ, वो उसको इंक्रीज करता है। सीएसएफ फ्लूइड है
जो फ्लो करता है ना, उस उसको हम टैप करते हैं, उसकी फ्लूइड। जब जब भी कोई प्रॉब्लम होती है हमें, मान लो हेडेक हो रहा है या और भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो ये जो ये सब फ्लूइड है, उसकी जो फ्लो है वो हिंडर हो जाती है। तो वाइल टैपिंग थ्रू द सीएसटी मोडालिटी, वो फ्लो अपने प्रॉपर चैनल चैनल पे आता है, और फिर वो पेन में धीरे धीरे रिलीज आता है। अलग अलग होल्ड्स होते हैं, और इट्स अ वेरी फेदर लाइक टच, जो पता भी नहीं चलता है कि कोई टच कर रहा है। Okay, thanks for explaining that. थैंक यू मैम, माय काफी प्लेजर। इंफॉर्मेटिव, हाँ, काफी इंफॉर्मेटिव था। तो एनीवन एल्स कुछ और पूछना है? राजवीन, राखी? My 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 periods have stopped since 2020, and now little bit. I'm actually on medication, Uh-huh. so everything else is normal except the lipids. Lipids means good लिपिड cholesterol. प्रोफाइल योर, Good cholesterol, या as in the it's a it's the oil in the body is like little bit on the low side, causing me anxious, but it's better now. My only question is yogurt will yogurt or lactobacilli योगर्ट। yogurt or lactobacilli be helpful for this kind of symptoms? सॉरी आई कुडंट गेट इट। योगर्ट। Well, yogurt or Yakult or lactobacilli or dark या chocolate, will it be helpful? Because यस यस, I take a lot of nuts and started taking a lot of nuts. लॉट ऑफ नट्स मीन्स हाउ मच? I started taking all kinds of nuts. Like even though I'm allergic, I'm started to take because it's good for me. So, what's your take on this? Thank you. Whichever nuts you are taking, measure it with your feast. It should not more than this. जितना एक feast में आ जाए उतना Yeah. nuts खाना चाहिए। और योगर्ट जो है, आप कितना कंज्यूम करते हो? पूरा एक बड़ा कटोरी भर के आप खाते हो कि क्या? एट एज पर माई नॉलेज 4 to 6 स्पून से ज्यादा योगर्ट नहीं खाना चाहिए। आप साथ में ना छाछ ले लिया करें। Oh, I normally I'll take it with sugar. Is it? शुगर के साथ नहीं लेना चाहिए। Yeah. हम्म। मुझे भी लस्सी पसंद है, वो भी मीठी। नहीं। उसको धीरे धीरे आप कम कर दें, और इनफैक्ट इफ यू आर स्टार्टिंग विद द कॉन्कॉक्शन, तो आप जो चाय लेते हैं ना, वो चाय भी धीरे धीरे आप कम कर दीजिए। हम चाय सुबह लेते नहीं है, इसीलिए तो डिटॉक्स वाटर लेते हैं। दैट्स गुड, दैट्स गुड। For me, I take black tea. It's helping. यस, ब्लैक टी इज ऑल्सो गुड। बहुत ज्यादा नहीं, 1 से 2 ब्लैक टी ले सकते हैं। No, I take a black tea like once a day. Dark chocolate. I डार्क चॉकलेट इज गुड फॉर मूड। I control my एलिवेटेड। and also laughter. Yeah. सॉरी। And and also laughter, because laughter yoga is very हम्म। energetic for health. यस। And I do a lot of laughter, so that helps. Thank you, Gurmeet. थैंक यू सो मच राजवीन जी। एनीथिंग एल्स? आई Yeah, Gurmeet. या Rakhi is asking a question. यस, हाउ Group अबाउट में chat में. मीट? Non-vegetarian, you mean, Rakhi, right? हाँ।
So how does that affect the How body, about the meats? period? I take, yeah, you can have meat, but all your vitals are as per your routine or whatever, what is your lifestyle. If it your vitals allows you to take meat, but how much meat you take, it depends upon that and how you cook it. Hello, Rakhi ji. Hello, ma'am. Yeah, hello, Rakhi ji. So I'm a non-vegetarian, but it's like a normal cooking, as in sometimes With it's all gravy. the spices, masala, That's right. Yeah. gravy. ग्रेवी वाला हार्म करता है, ग्रेवी वाला नहीं लेना चाहिए ज्यादा. Okay. And what? How much? Say in a week's time, how many times can we take non-vegetarian? Like again, I said it will all come under the protein, I think, right? So 300 grams per it is there is a calculation with your weight actually. मैं ये calculation group में डाल दूंगी कि Protein is for every 10 grams, you have to take 1 gram. हाँ Sorry, हाँ every 10 kgs. 10 So if kgs. if you're weighing 60 ग्राम से तो kgs, बहुत सारा हो जाएगा. पता नहीं, I mean, you calculate, but that's what I will put this calculation in the group. तो उसके हिसाब से आपको उतना हर मील में उतने ग्राम्स ऑफ प्रोटीन आपको लेना है. 60. So if you're weighing 60 kgs, then it's 60 grams of protein. Every kilo is 1 gram. हम्म. I तो know And this. it's I okay to think take so, non-vegetarian. Rakhi ji, depending upon the size of the piece, I think not more than two pieces, I think. Okay. Okay. So one should be vegetarian or one should be non-vegetarian. It depends upon person to person. Okay. Where as I Two am pieces of what? vegetarian, I every time I prefer कि I will say vegetarian is good, but depends upon the person. If he loves eating non-veg, okay, but how you are eating it? Not Sometimes fried. we roast it. हाँ, रोस्टेड. Most of the times it's अगेन kadai. रोस्ट आप किस तरीके से रोस्ट कर रहे हो उस पे भी फिर बहुत मैटर करता है ये, है ना. आप कितने उसमें रोस्ट के लिए जो आप मैरिनेट कर रहे हो, आप उसको कैसे मैरिनेट कर रहे हो, आप ऑयल उसमें कितना डाल रहे हो, ये इस पे डिपेंड करता है कैसे रोस्ट कर रहे हो. हेल्दी वे में कुक कर रहे हो तो नो हार्म. और Okay. यस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, पैरेलली आप एक्सरसाइज कितनी कर रहे हैं, आप कैलोरीज कितनी बर्न कर रहे हैं, आपकी एक्सरसाइज कितनी है, Mm-hmm. फिजिकल एक्टिविटीज कितना है, ये सारी चीजें मैटर करती हैं. Okay. Okay. अगर आप ये सब चीजें फॉलो करना शुरू करेंगे ना, तो लाइक मुझे तो बहुत ज्यादा फायदा हुआ था, इसलिए मुझे लगा कि ये वाला टॉपिक इस पे बात करें तो इट विल बेनिफिट फॉर एवरीवन. वॉक जरूर करना है, 10,000 स्टेप्स. आपकी एक्सरसाइज में जैसे आप अगर 4 डेज एक्सरसाइज करते हैं तो चारों दिन अलग अलग टाइप की एक्सरसाइज करें. Okay. वेट ट्रेनिंग होती है, और फ्लेक्सिबिलिटी होती है, और भी बहुत सारी चीजें हैं इसमें एक्सरसाइजेस में, आप वो करें. सनलाइट एक्सपोजर जरूर हो, उसको आप Okay. अपनी टाइमिंग के हिसाब से मैनेज कर सकते हैं. जी. तो ये सब ना हमारे न्यूट्रिएंट्स को बॉडी में एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, जिससे वी कैन गेट अ हेल्दी बॉडी. Okay. और प्राणायाम और कुछ कुछ योगा के आसन हैं जो कि हमें अपने लाइफ में अडेप्ट कर लेना चाहिए. तो ये हमें बैलेंस देता है मेंटली और फिजिकली भी. एंड दीज ऑल आई एम टेलिंग विथ माय ओन एक्सपीरियंस.
Okay. And supplements that we should start taking? अगर आप ना लाइफस्टाइल ये ऐसी चेंज कर लेंगे ना, आप जो अभी मैंने बताया है, आपको सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Okay. हम्म बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। हाँ, बस आपको आपके डाइट का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जिसमें फाइबर होना चाहिए, गुड कार्ब्स होने चाहिए, प्रोटीन्स होने चाहिए। Okay. विटामिन सी, डेली का विटामिन सी होना बहुत जरूरी है, हमको लेना ही लेना है। आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खा रहे हैं तो उसमें ऑब्वियसली आयरन है, तो वो भी हमें, इसलिए मैंने बोला कि फूड का, हम कैसा खाना खा रहे हैं उस पे हमारा फोकस होना चाहिए। आप बस इस पे ध्यान देंगे ना, आपके सारे वाइटल्स बहुत परफेक्ट आते हैं। 1 मंथ Okay. मैंने फॉलो किया था, आप बिलीव करेंगे, आई कैन शेयर माई रिपोर्ट इन द ग्रुप ऑल्सो। जबकि मैं 4 इयर्स तक कंटिन्यूसली ब्लीड कर रही थी, बीच में हाफ हम 4-5 डेज के लिए स्टॉप होता था, अदरवाइज इट वाज ब्लीडिंग कंटिन्यूसली। मेरा हीमोग्लोबिन वाज 12.7, सारे वाइटल्स ठीक थे, विटामिन डी मेरा ओवर आया था। मेरी डॉक्टर रिपोर्ट्स देख के हैरान हो गई थी। तो ये हैं, कुछ कुछ चीजें हैं। मैं मीनू जी से और शबाना जी से आई विल टेक परमिशन, अगर बोलेंगे तो एक छोटा सा जो डाइट प्लान है वो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी, और प्रोटीन का इनटेक कितना लेना होता है वो भी मैं शेयर कर दूंगी। Thank you so much. माय प्लेजर। कॉन्कॉक्शन बहुत हेल्प करता है राखी जी। अ, राखी जी, मैं बोल रही थी कॉन्कॉक्शन बहुत हेल्प करता है। विद्या बालन का अभी बहुत बहुत ज्यादा था वेट लॉस का, कि उन्होंने जो डाइट प्लान लिया, मेरे उनका बॉडी फैट नहीं था, बॉडी में वाटर रिटेंशन था, है ना, ये उनको कॉन्कॉक्शंस दिए जाते थे। ये वही कॉन्कॉक्शंस हैं जो सारे अभी मैंने मेंशन किए ना, हमारे किचन में सारे हर्ब्स हैं। Right. तो यू कैन स्टार्ट विथ सिनेमम। सिनेमम बहुत अच्छा डिटॉक्सिफाई करता है, और फ्लेवर भी अच्छा लगता है, और उसको सिप सिप करके पीना है ना, एक साथ नहीं पीना है। और जब भी भूख लग रही है, फॉल्स भूख लग रही है, मान लो जो हमारा खाने का टाइम है, अगर आप खाने का टाइम भी फिक्स कर लें, जैसे 8 बजे आपने ब्रेकफास्ट कर लिया है, उसके बाद आप 1-1:30 तक आप लंच कर लें, फिर इवनिंग में जब आपको भूख लगती है ना, ये जो मंचिंग का टाइम होता है ना, उस समय या तो आप हाफ एप्पल ले ले। फ्रूट्स भी खाने का, लाइक हम जब फ्रूट्स खाते हैं तो मान लो हम ग्रेप्स लेके बैठे हैं तो पूरा एक बंच ही पूरा हम कई बार खत्म कर देते हैं बैठे बैठे। नहीं, वो क्वांटिटी भी हमें मतलब ध्यान से खानी है, उससे वेट बढ़ता है। वेट भी बढ़ता है, और उसके जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होने चाहिए वो एब्जॉर्ब नहीं होते हैं बॉडी में, और कई चीजों को हम एक साथ मिक्स कर देते हैं। जैसे फ्रूट सैलेड जब बनाते हैं तो कितने सारे फ्रूट्स हम मिक्स कर देते हैं, तो ये सब छोटी छोटी सी आई थिंक चीजें हैं। आपको ना इसका एक और सेशन लेना पड़ेगा कि कौन से फ्रूट्स किसके साथ क्या खाना चाहिए। बहुत डीप में जा रहा हाँ जी। है। तो we'll discuss about it, तो एक आप या, उसके वो भी सेशन रख सकते हो कि क्या कॉम्बिनेशंस में हमें खाना चाहिए, यस, ठीक है ना। श्योर मैम, श्योर श्योर। आई विल। थैंक यू सो मच, हमने बहुत थैंक सारी इंफॉर्मेशन दे दी, तो थैंक बहुत यू सो अच्छी तरह मच, से आपने थैंक यू एक्सप्लेन मीनू किया। जी थैंक for giving me this यू opportunity. एवरीवन, Thank you, एवरीवन Shabana फॉर ji. जॉइन, थैंक यू सो मच। सो Thank विल you, वाइंड अप नाउ, everyone. एंड Yes, कल ma'am. मिलते हैं फिर 8 Yeah, बजे, ठीक yeah. है। Thank you. Thank you so much. थैंक यू। Thank you. Thank you, Minu ji, for giving this opportunity, Shabana ji.